Now today let's start with chapter number 8, light, shadow and reflection. So in this chapter let's study about light, shadow, what our shadow is formed in different way in morning or in the evening, and then reflection. So let's study about the sources of light. First of all, I will tell you about that we have two sources, that is natural, that is sun, moon, stars, in natural source हो गया. And we have man-made or artificial source like candle, bulb, tube light. These all are the artificial sources, right? So fuel like coal, natural gas, petroleum. They are the remains of plants and living organisms. They can be changed by nature over millions of years. So then we depend upon light. हम life पे depend करते हैं food पे, for food, oxygen and heat. So I have told you about the sources of light. जो भी object light emit कर रहा है, उसको हम source of light कहते हैं. I have told you about the natural source and man-made source. Now what are the natural source? First is sun. Most important है. And it is very bright source. And it is 150 million kilometer away from the earth. It gives sufficient light to make the day bright or warm for us on the earth. ठीक है? Then we have stars. Only small amount of light. ठीक है? जो twinkling light है वो दिखाता है. Then we have जुगनू, glowworm, firefly. ये भी एक अंदर सोच of natural light है. Then we have man-made sources. So like we have candle, oil, lamps, bulbs, CFLs, LEDs, right? These all are the man-made sources. हम artificial sources भी कहते हैं. Next we have luminous and non-luminous object. Object that emit lights, they are known as luminous object. That do not emit light, they are known as non-luminous object, right? So object मैंने बताया जो अपनी light emit करता है luminous, जो light emit नहीं करते हैं, but they are visible by the reflection of some other luminous object, they are called non-luminous object. Like we have car, clouds, moon, they all are luminous object. Now classification of luminous object. We have classified into three types, transparent, translucent and object. What is transparent? Material जो allow करता है electricity to pass through it. ठीक है, जो allow करता है electricity to pass through them, इसे हम transparent object कहते हैं. इसका एक ऑप्टिकल मीडियम होता है, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर. What are these? These are the example of transparent object. Then we have translucent, जो कुछ only some amount of light को pass करवाता है, right? Like we have frosted glass, greased paper, butter paper, right? Opaque object क्या होता है, जो बिल्कुल भी light pass नहीं करवाता, जैसे wood हो गया, metal हो गया, right? Stones, bricks, these all are the opaque object, right? So we can say there is a vast difference between all the three types of object, whether it is transparent, translucent and your opaque. जो transparent है वो less denser होता है, ठीक है, light pass करती है. Translucent denser होते हैं, लेकिन कुछ sun ही light pass कर पाती है. Then we have to observe the passage activity through आपको उसमें बताना है कि कौन सा ट्रांसफर, आप खुद चेक कर सकते हैं विद द हेल्प जो मैंने आपको अभी इसके प्रॉपर्टीज बताई है उसके थ्रू. नाउ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रे क्या होता है? एक नैरो बीम ऑफ लाइट, उसको हम रे कहते हैं. लाइक दिस इज अ नैरो बीम ऑफ लाइट, इसको हम रे कहते हैं. ठीक है, जो स्ट्रेटली मूव करती है इन डायरेक्शन द रेज मूविंग. बीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ लाइट जो एक स्ट्रक्चर मैनर में मूव करती है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं. बीम वी हैव क्लासिफाइड इनटू थ्री काइंड्स, पैरेलल बीम, your convergent and divergent. If we talk about parallel, इस तरीके की बीम को पैरेलल कहते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, राइट? दिस इज कन्वर्जेंट. ये क्या कर रही है? कन्वर्स कर रही है. ठीक है, तो ये क्या है? एक मीटिंग पॉइंट से वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. देन वी हैव डाइवर्जेंट व्हेन रेज ओपन. ये बाहर की तरफ जब खुलती है, देखो ये अंदर की, ये आगे मिल रही है, ये बाहर खुल रही है. ठीक है, सर डाइवर्जेंट कहते हैं. Next is light travels in a straight line, which is known as rectilinear propagation of light. So in homogeneous transparent medium, light travels in a straight line, उसको हम rectilinear propagation of light कहते हैं. ठीक है, purpose to discover how light travel. हाँ, यहाँ पे activity दी है, क्या क्या material चाहिए आपको और procedure क्या होगा, यहाँ पे procedure भी दिया हुआ है. So you can see here for each index card we use ruler to draw line connecting opposite corner of the card. ठीक है, और आप पंच करोगे होल और उसमें से आप देख सकते हो कि क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है या नहीं. नाउ स्पीड ऑफ लाइट. अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 1,86,000 per second और 3 लाख किलोमीटर.
which is equal to the several times the distance around the earth in just 1 second. SI unit क्या है स्टेट की? मीटर पर सेकेंड. What is the SI unit? That is meter per second. Then we have shadow. So an opaque object when placed in a path of light blocks its passage and forms a dark area on the screen. जो उसके पीछे प्लेस्ड होती है, आप देखेंगे तो शेडो हमेशा बैक साइड बनती है या फ्रंट में बनती. लाइट कैंडल इन अ डार्क रूम एंड लाइट फ्रॉम द कैंडल इल्यूमिनेट्स रूम एज इट फेल्स ऑन द फ्लोर, या फिर वॉल पे दिखाई देगी. ठीक है, तो डार्क पैचेस जो होते हैं वो आपको रिजेंबल करता है ऑब्जेक्ट की क्या है, वो शेड. देन वी हैव एक्लिप्स. इट इज एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, राइट, जो अकर करती है व्हेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज टेम्परली ऑब्स्क्योर, ईदर बाय पासिंग अनदर बॉडी or by having another body pass between its rear. So we can say that the earth and the moon, they are non-luminous and opaque, but sun is luminous and a source of light. ठीक है, और जो अर्थ है और मून है वो किसकी शेडो कास्ट करते हैं, लाइट ऑफ द सन. और उससे क्या होता है, आपका एक्लिप्स होता है. Basically there are two types of eclipse. I have told you also, solar eclipse and lunar eclipse. So if we talk about solar eclipse, जब आपका मून सन और अर्थ के बीच में होता है, तो while rotating when the moon comes in between sun and earth, इसको solar eclipse कहते हैं. और जब total eclipse होता है, जो अर्थ है वो एक ring of light form करते हैं around the moon, वो जो किसका पार्ट है, sun का, and it does not cover moon. lunar eclipse जब आपका अर्थ सन और मून के बीच में होता है, तो कौन सा eclipse होता है, lunar eclipse, right? Next is pinhole camera. Let's study about pinhole camera, which is based upon the principle of rectilinear propagation of light. It consists of rectangular light proof box with very small hole. देखो बहुत छोटा सा होल होता है इसके मिडल में, right? On one face and shutter arrangement to open the close hole. Photographic plate is usually placed on the opposite side. जो आपकी photographic plate होगी ना, वो हमेशा आप देखेंगे opposite side पे रखी जाएगी, right? So we can say the sharpness and the size of the object can be alerted by adjusting the distance of object from the hole. A smaller the hole, the sharper the image, right? जितना छोटा होल होगा उतनी शार्पर आपको इमेज दिखाई देगी. प्रिंसिपल क्या है, विद द पिनहोल कैमरा लाइट इज पास थ्रू वेरी स्मॉल होल, जैसे वन मेड बाय नीडल, सो द इमेज इज फॉर्म ऑन द फिल्म. आप देखेंगे कि जो इमेज है वो आपको हमेशा जिस पे, फिल्म पे फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू सनलाइट, the light reflected scattered various distances and you can take the box. Next we have deflection of light. The process of जब light bounce back करती है, the process of bouncing back light rays which falls on the surface of the object is reflection. With the smooth surface, reflected light is much better. Rough surface, they do not reflect light well. Image and shadow. An image formed in a mirror is very different from shadow of an object. We see on the screen. Let us compare and find out the difference between two. ठीक है, आपको एक difference देना है दोनों के बीच में. What is image and what is shadow? So image क्या है? An image by a plane mirror is formed due to reflection of light. और ये किसकी वजह से होती है, shadow, जो आपकी opaque object की जो lights block हो जाती. The size of image is same as size of object. The size of shadow changes. जैसे जैसे source of light या position change होगी तो shadow का size भी change होता रहेगा. We can see color of the object. Shadows are always black regardless of the color. It shows detail of the object or it shows outline or shape of the object. ठीक है, outline और shape को बताता है. Here the activity is given how to demonstrate reflection of light through a show box, right? So you can do it one time at home. Here the conclusion is also given, right? Now we have completed the chapter. Let's move to the exercise. Now I will do the exercise for you. First is your multiple choice question, that is tick the correct. Light is a form of, light क्या है? It's a form of energy. Object that do not allow light to pass through them, what we call them? Opaque object. Right? Which of the following is non-luminous? जिसके बाद अपनी light नहीं होती, moon. ये किसकी light लेता है? sun की. Next is an opaque material which obstruct the path of light is called an object. During a solar eclipse, the shadow of the moon falls on the. जब solar eclipse होता है तो shadow जो होती है moon की वो किस पे fall करती है? अर्थ, sun, moon, Jupiter. तो किस पे करती है? अर्थ. Next is fill in the blanks. Light is a form of. Light क्या है? एक form of energy है.
Next is a glowing electric bulb is a dash source of light. कैसा है? Artificial. We can also write man-made over here, but I'm writing here artificial. Dash bodies can emit their own light. कौन सी body? अपनी light luminous. Shadow as form because जो light है वो किस में travel करती है? Straight line. A solar eclipse can occur only on a कब अकर करता है सोलर एक्लिप्स? न्यू मून डे. नाउ राइट T for true and F for false statement. Non-luminous bodies reflect all lights that falls on them. It's true. Light cannot travel in vacuum. False. We can see shadow if there is no light. False. And solar eclipse occur when the moon shadow falls on the earth. It's true. The image formed by the pinhole camera is inverted. It's true. वो कैसी होती है हमेशा? Inverted होती है. Now match the following question. Sun, natural source of light. Sun क्या है आपका? Natural source of light है. ठीक है? It is umbra, dark part of the shadow. Eclipse, shadow of the moon on the earth. Candle, artificial source. और आपका mirror क्या हो गया? Reflection. Right? Now let's start with the short answers question. Right? First is what are luminous and non-luminous object? ठीक है, luminous और non-luminous object क्या होते हैं? How are shadow formed? Shadow कैसे form होती है? That you have to tell here. Then we will distinguish between image and shadow. Next is when does lunar eclipse occur or when does solar eclipse occur? Now long question. What is rectilinear propagation of light? ठीक है, जब आपकी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं उसको रेक्टिलिनियर कहते हैं. Then we have to distinguish between luminous and non-luminous object. ठीक है, luminous object are the object that emits their own light and non-luminous object they do not emit their own light. So what we have to write? We have to write the examples over here. Describe the help of diagram the formation of solar eclipse and lunar eclipse. State an example the principle of pinhole camera. You are given a transparent glass sheet. Suggest in it 2 ways. आपको 2 ways बताने. Right? This is all about in this chapter. We have done with the exercise. Let's meet in next class. That's all for today. Thank you.